जय जगन्नाथ एवरीवन केमती समस्ते अच्छो सब भल तो गुड आफ्टरनून केमती सब अच्छो जनाओ टिके ऑनलाइन ना हो ना कौन तुम को नोटिस जाइए ना नहीं क्लास इंग्लिश क्लास 4टा बेले होउची बोली डू यू नो इट नॉट नॉट तुमको तो कहला शेड्यूल कहला कि 4टा बेले एथर तुम इंग्लिश क्लास रोची बोली तुम विथ टाइम बोधे पळे आसीबो ओके तो आम स्टार्ट करिया बट स्टार्ट आवर सेशन तो माने ऑलरेडी जानिछो कि टुडे इंडिया लॉस्ट a huge philanthropist and businessman who is equally a great Nobel that India ever produced. किए सी ना as you know Mr. रतन टाटा सर कि तांकर काली देहांत हो जाइए तो सेतिपाई इंडिया रो प्रत्येक लोक माने जो माने भी माने बिजनेस आउ चैरिटी को बहुत माने बेटर वे रे करिया पई देखंती एंड ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया आर वेरी सैड फॉर दिस न्यूज एंड मु भाबुची कि तुम माने भी तांकर सद्भावना तांकर सद्गति पई समस्त प्रार्थना करिवो ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ओके स्टार्ट करिया ताले हो स्टार्ट करिया हला एटा कोन सला सर के बिले इके खाली प्रोसेसिंग पे जस्ट हल्का टाइम दियो हे जीवो हां हेगला तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन इडियम फेजेस रो क्वेश्चन एज यू नो इडियम फेजेस रे कोन एबे हम क्वेश्चन इडियम फेजेस रो केमती पचारु जंदी विथ सेंटेंस पचारु जंदी हला तो मान को जदी ऊपर आईडिया है सालानी जो माने रेगुलर क्लास करछो यू ऑलरेडी नो कि हमें एबे क्लास केमती कर जंदी इडियम फेजेस रो एबे क्वेश्चन तुम एग्जाम हॉल रे कि एग्जामिनर एबे विथ सेंटेंस ताकू सेट करूची हैला तो सेहिति पई हमें कंफर्टेबल हवा पई सेति पई हमें क्वेश्चन को विथ सेंटेंस ही देखिबा so first question she goes to her mother's house of and on she goes to her mother's house of and on एठी तो देई दिया है ब्रैकेट देई दिया है कि अंडरलाइन कर दिया है कोडा इडियम आ कोडा फेज तुम जानिया पई अंडरलाइन कर देछि बट आज यू नो कि एग्जाम रे एबे एग्जाम रे से टोटली अंडरलाइन भी करूनी कि एतिरे इडियम फेजेस कोउटा तुमको सेंटेंस पढिया को पड़िबो सेंटेंस को बुझी कि सेतिरु इडियम फेजेस को खोजिया को पड़िबो तापरे तुमको इडियम फेजेस रो मीनिंग को बुझिया को पड़िबो गॉट इट सो आज तो देई देइछि इट्स ओके तो ट्राई करो ऑफ एंड ऑन रो माने कोन ऑफ एंड ऑन रो माने कोन यार ऑपोजिट रे भी गोटे वर्ड अछि म तुमको बढ़िया वर्ड टे कहबी ऑफ एंड ऑन रो माने कोन शी गोस टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन रो माने कोन ट्राई करो बिले समस्त ट्राई करो शी गोस टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन ता माने से फ्रीक्वेंटली ऑफ एंड ऑन माने पिले कोन फ्रीक्वेंटली ता मदर रो हाउस को विजिट करे ऑफ एंड ऑन एंड ओकेजनली रो भी गोटे इडियम फेजेस अछि एंड ओकेजनली रो इडियम फेजेस कोन डाउन कोन गो एंड डाउन ना कोन नाउ एंड अगेन कोन नाउ एंड अगेन ना गो एंड डाउन कोन हबो नाउ एंड अगेन ना गो एंड डाउन ओकेजनली रो इडियम हैला गो एंड डाउन ओके यार मीनिंग हैला ओकेजनली एंड ऑफ एंड ऑन रो माने हैला फ्रीक्वेंटली गॉट इट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को जाबिले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द रोबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स द रोबर मर्डर्ड द वुमन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स ट्राई करो बिले कोन हबो इन कोल्ड ब्लड रो माने कोन एठी इडियम फेजेस कोन एठी इडियम कोन ना इन कोल्ड ब्लड माने कोन ट्राई करो कोन हबो ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग ए मर्डर डन इन रिवेंज ए मर्डर डन इन ग्रेट एंगर ए मर्डर डन इन एनिमिटी कोन हबो ट्राई करो बिले समस्त सी ए मर्डर डन इन ग्रेट एंगर ना मर्डर डन इन रिवेंज एब्सोल्युटली correct na a murder done in great anger that is called in cold blood okay तो in cold blood ro
मीनिंग तुम जदि बुझिया पई चाहिबो when a person murder someone in a very cruel manner, when a person murder someone in a very cruel manner, that is called in cold blood. Okay, तो तमे कोन बुझिबो ना a person who murder murdered in a cruel manner. Okay, that is called in a cold blood. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन को जो ताले आंसर कोन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाइस नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. तो गोइंग प्लेसेस रो इडियम फ्रेजेस रो माने एठी पचारि दम. गोइंग प्लेसेस ट्राई करो. गोइंग प्लेसेस रो माने कोन हबो. बी. आंसर बी. टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. गोइंग टू स्पेस, गोइंग टू अब्रॉड, फ्रेंडली एंड अमिकेबल. अमिकेबल रो माने कोन. अमिकेबल रो माने जहा, फ्रेंडली रो माने ता सेम अछि. फ्रेंडली एंड अमिकेबल, two things are same. Okay, so कौन हबो ताले इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी. गोइंग प्लेसेस रो माने एया पिले when a person going somewhere to develop his wealth, when a person going somewhere else to develop his or her wealth, that is called going places. ताले कौन हबो. talented and successful. Option C is the correct answer. Got it? Going places रो माने कौन हला कि when a person going great in terms of wealth. Okay, in terms of wealth, that is called going places. बुझियला. जो माने ऑनलाइन अछो, जो माने बे माने क्लास को ऑनलाइन देखुचो एबे लाइव अछो, काइंडली शेयर द सेशन सो दैट जो माने हम रेगुलरली माने जोड़ी होंती आम सहित रेगुलर क्लास रे, तो सो दैट से माने जॉइन करि परिबे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4. द पोएट ड्यू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स. ट्राई करो बिले कोन हबो. द पोएट ड्यू ऑन हिज फैंसी. ड्यू ऑन हिज फैंसी, ये जो ऑन हिज फैंसी इज द इडियम हियर. ओके, ऑन हिज फैंसी इज द इडियम हियर. नॉट his knowledge of nature when he wrote his poem on birds. कौन हबो. ट्राई करो. on his fancy, जानि पारथो जदि फैंसी वर्ड गोटे माने एठी अटैच कर दिया on his fancy. ट्राई करो कोन हबो. on his fancy. on his fancy माने कोन हबो. on his fancy. फैंसी माने कोन. गोटे लोक जेतले कहे कि आई एम ही इज इन ही इज अ वेरी फैंसी बॉय, ही इज अ वेरी फैंसी गर्ल. ता माने कोन. what he thinks in his imagination, what he or she thinks in his imagination, that is called fancy. ता माने fancy माने कोन. what someone thinks in his imagination. Okay, what someone thinks in his imagination, that is called ना on his fancy. ताले कौन हबो. used in understanding, used his knowledge, used his imagination. कौन हबो ताले. used his imagination is the accurate answer. Option 3C. Okay, right. निर्मला right. used his imagination. Okay, option C is the correct answer. next question को जो पहले. next question कौन अछि. हाँ, my neighbor had to pay through his nose. my neighbor had to pay through his nose for a brand new car. कौन हबो. my neighbor had to pay through his nose for a brand new car. कौन हबो. ट्राई करो समस्ते. कौन हबो. pay huge loans, ना pay reasonable price, ना pay an extremely high price, ना make a quick buck. buck माने कौन. make a quick buck. ऑप्शन रे देखा मते कहिलो कमेंट सेक्शन रे buck माने कौन तो जानिछो. buck माने कौन. buck माने कौन. to pay through his nose माने कौन. कोठा हबो. ऑप्शन सी. pay an extremely high price. right. who has money to pay an extreme who has money to pay extreme things. Okay, that is called na pay an extremely high price. You have to buy something and you have to pay for sell that product or buy that product very in a high margin. Got it.
very high margin जेतले गोटे high margin रे तमे जिंस को किनो that is called pay an extremely high price. Okay, and that idiom is called to pay through his nose. Got it? बुझी होची? Right. बक माने बक करबा कि ना बक that is not बक, that is bonk, BUNK. बंक माने क्लास बंक करबा कि कॉलेज बंक करबा, that is bonk, this is बक. कमेंट सेक्शन में मते जणा बक माने कोन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन अछि. आज यू नो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एबे तमरो रेगुलरली आक्सी माने क्वेश्चन आसुची. एंड ओडिसा पुलिस रो प्रीवियस ईयर पीआईक्यूज को भी तमे देखिबो देन फिल इन द ब्लैंक्स रो क्वेश्चन भी सेतिरे बहुत हापियर हेछि. तो सेति हमें फिल इन द ब्लैंक्स रो क्वेश्चन रखि जंदी ना कोन 700 men worked for 10 years to dash the Barbadar temple in Java to its former glory. 700 जन लोक केते टाइम देले टू कोन करिले ना बर्बदर टेम्पल जो जाभा रे अछि टू फॉर्मर ग्लोरी माने पूर्वरु जेमिति तार ग्लोरी माने ग्लोरी थिला टू फेरेबा पई 700 जन लाग जाको लोक कोन कले. ट्राई करो. 700 men works for 10 years to restore, to create, ना गिव ना रिवाइव. कौन हबो? ट्राई करो. 700 men worked for 10 years to create the Barbadar temple. Okay, to create ना restore हबो. कौन हबो? to create हबो ना देखो restore revive two things are synonym to each other. Okay, restore and revive two things are synonym to each other. Okay, give and create are two different things. तो कौन हबो? ट्राई करो. create हबो ना रिस्टोर ना रिवाइव हबो. कौन हबो? ऑप्शन बी 6 नंबर बी क्रिएट. रिस्टोर किए कहूची 5C ना प्रतिज्ञा कहउछन्ती कोन ऑप्शन बी. आ कोन हबो? क्रिएट हबो ना रिस्टोर हबो? 700 men तमे जदी क्वेश्चन रो कॉन्टेक्स्ट को ठीक से बुझी पारुज देन क्वेश्चन रो कॉन्टेक्स्ट कोन कहिची 700 men worked for 10 years to dash the Barbadar temple in Java to its former glory. ता माने ऑलरेडी से टेम्पल सेठी अछि. ओके, बट जेहेतु बहुत पुराना टेम्पल तार ग्लोरियसनेस कमी जाइछि, तार ग्लोरी कमी जाइछि. तो 700 पीपल कोन कले 700 पीपल लागी कि तार ग्लोरी को पुणी आउ थरे वापस आनिले. तो वापस आनिबा को कोन कहा जाय? रिस्टोर कहा जाय. नुआ क्रिएट करबा को नुआ बनेबा को क्रिएट कहा जाय. गॉट इट. बट वापस आनिबा को कोन कहा जाय? वापस आनिबा को रिस्टोर कहा जाय. ओके, ताले कोन हबो? 700 men worked for 10 years to restore the Barbadar temple in Java to its former glory. तो एई भलिया क्वेश्चन रे तुमको कॉन्टेक्स्ट को बुझिया को पड़े. आ किछि नै. इफ यू नो द कॉन्टेक्स्ट देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? द thief explain how he dash from jail. बढ़िया क्वेश्चन पिलेडा. ट्राई करो. द thief explain. जदि तुमे क्वेश्चन को पढुजो देन ऑलरेडी ही टोल्ड ना एटा को आडू को क्वेश्चन जाउछि. ऑलरेडी दिस क्वेश्चन टोल्ड यू दैट एटा को आडू को क्वेश्चन जाउछि. मु तुमको हिंट दे दोछि ना एक्सप्लेन ऑलरेडी मेंशन अछि. ताले तुमे जदि टेंस रे क्लियर अछो देन यू नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट ए पास्ट इवेंट and already that past event related to another past event who is later and who is earlier. So earlier event takes past perfect and the later event takes only past tense, simple past tense. तुम एटा बहुत भलो भाबे जानिछो. ताले कोन हबो? past perfect हेले कोन हबो? had escaped. Okay, the thief explained how he had escaped from the jail. बुझियला कोन कहूची बुझी पारलो ना कोन मुइतिरे कहली टेंस रो गोटे रूल अछि. टेंस रो रूल रे एया मेंशन अछि जे जते बेले गोटे जिंस पास्ट रे घटिछि एवं तारो आहुरी पास्ट रे आ गोटे घटना घटिछि ताले नॉर्मल पास्ट को आमे सिंपल पास्ट रे रखंती एंड तारो पछो पास्ट को आमे पास्ट परफेक्ट रे रखंती. इट्स ए सिंक्रोनाइज ऑफ द टेंस. बुझी पारजो कोन कहूची. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि? ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली. ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली. देखो एटे पूरा हेल्ड देइजी. तो हेल्ड देइजी माने कोन? काहारटा पास्ट फॉर्म. हेल्डटा काहार पास्ट फॉर्म. हेल्डटा काहार पास्ट फॉर्म. हेल्डटा होल्ड रो पास्ट फॉर्म. एंड इफ यू नो ताले होल्ड सहित कोउटा फिक्स प्रीपोजिशन बसे. जदि तुमे जानिछो ताले होल्ड सहित कोउटा परफेक्ट प्रीपोजिशन बसे. होल्ड आउ कोनोसी प्रीपोजिशन सहित सहित नियेनी. इट नेवर टेक्स अनदर प्रीपोजिशन विथ इट. ओ प्रीपोजिशन ता सहित निये ता सहित होल्ड सहित सबले ऑन प्रीपोजिशन बसे. ताले होल्ड रो पास्ट फॉर्म हो जाई जी
बट प्रीपोजिशन तो सेम रहइबो ऑन बुझियला होल्ड ऑन माने कोन ही होल्ड ऑन टू द बुक्स पैशनेटली त माने से जते बेले बुक्स पढे सेतिरे एते मजी जाए से माने फील भी करि पारेनी कि से केते पैशनेट बुक्स पढि पारे गॉट इट कोन कहउची बुझी होउची नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ताले कोन हबटा आंसर कोन ऑन ओके हेल्ड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम they did not know where they dash from try करो they did not know where they dash from ମୁଁ ऑलरेडी क्वेश्चन तुमको मेंशन करिछि कहिछि या पूर्व क्वेश्चन रे कहितली ना कोन एतरे हिंट कोन देछि did not एतरे हिंट कोन देछि did not अछि माने एतरे पास्ट फॉर्म यूज हेछि टेंस रो पास्ट फॉर्म यूज हेछि ता माने कोन कहली ना जते बेले गोटे टेंस रो पास्ट फॉर्म विषय रे पचारिथिबो पास्ट घटना विषय रे पचारिथिबो तारो पास्ट रे जो घटना हेइथिबो ता पूर्वरु आमे माने फास्ट घटना को आमे पास्ट परफेक्ट रे रखिबा एवं तारो लेटर घटना को आमे सिंपल पास्ट रे रखिबा एटा हला टेंस रो रूल तो दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम ता माने से माने कोउटु आसीछंती दैट इज ए earlier action and they did not know that is a later action understood कोन कहउची बुझि परजो तो जदी later action is in past simple form ताले earlier action कोउटा होबो ताले earlier action कोउठी होबो परफेक्ट रे होबो पास्ट परफेक्ट रे होबो ता माने where they had come from where they had come from because past perfect रे यू नो कि हमें have has रो had करंती and past participle form यूज करंती come came come okay had come they did not know where they had come from okay next question को जीवा next question कोन अछि there is only one member who has not paid his dash and he has promised to pay before the end of this month कोन हबो ट्राई करो माने एटा तो एई सेंटेंस सहित तो तमे रेगुलर अटैच थिबो एई भलिया तमे माने एबे तो सिचुएशन एई भलिया हे गलानी तमे मोबाइल लैपटॉप जदी यूज करछो देन एई सेंटेंस एई कॉन्टेक्स्ट को तमे इजीली बुझी पारथबो वेरी इजीली ट्राई करो कोन हबो ना कोन देइची there is only one member who has not paid his dash and he has promised to pay before the end of his month ताले कोन हबो तमे मंथ रे प्रत्येक मंथ रे कोन पे करो प्रत्येक मंथ रे इलेक्ट्रिक बिल पे करो प्रत्येक मंथ रे मोबाइल बिल पे करो प्रत्येक मंथ रे वाटर बिल पे करो प्रत्येक मंथ रे जो माने मेट्रोपॉलिटन सिटी रे रहउजंती से माने गैस बिल पे करंती so that all the pays are included as a subscription that all the pays as included as a subscription ताले कोन होबो एठी आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ना कोन there is only one member who has not paid his subscription and he has promised to pay before the end of this month because at the end of the month तमे तार सब्सक्रिप्शन पे फुल पेमेंट न करिवो देन योर सब्सक्रिप्शन गेट कैंसिल बुझियला कोन कहली एंड रेमिटेंस माने कोन एंड ऑनोरियम माने कोन अलाउंस माने कोन ट्राई करो कहया पई रेमिटेंस माने कोन ऑनोरियम माने ऑनोरारियम माने कोन एंड अलाउंस माने तो तमे जानिचो कि जोटा कि माने हमरो किछि पॉक्स मिले पॉक्स जो पॉक्स कहंती कोन पॉक्स कहंती जो दैट इज कॉल्ड अलाउंस पॉक्स जो हमरो हाउस अलाउंस हो कि ट्रैवल अलाउंस हो कि ऑयल अलाउंस हो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मनी इफ यू टू continue in a great manner you have to pay someone the company or the government you have to pay some extra money to you okay that is called allowance or pox so honorarium ଆଉ remittance माने कोन ट्राई करो कहया पई honorarium and remittance माने कोन honorarium माने हला पिले when a person paid for his professional work that is called honorarium okay that is called honorarium and remittance माने कोन बैंकिंग स्टूडेंट जो माने से तो बहुत भलो भाबे जानथो remittance माने कोन remit कमेंट सेक्शन में जणाओ remittance माने कोन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन he was an dash swimmer but was swept away by a strong dash swept away माने कोन swept away रो माने जदी तुम जानि पारुछो देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन swept away ताकू कोन कला swept away ताकू फिगडे देला ताकू पेली देला जदी सेही माने अनुसार तुम बुझिबा पई चाहबो देन ताकू फिगडे देला पुलिस पई क्लास आनो चैप्टर बेसिस सर
निहाती निहाती आनिया प्रतीक आज यू सेड निहाती हबो पुलिस ओडिशा पुलिस पई निहाती क्लास आसा हबो आसा जीवो आना जीवो ओके तो ट्राई करो एटा ही वाज एन डैश स्विमर बट ही वाज स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रांग आउ प्रतीक एटा भी गोटे कथा ना तुम जदी ए क्लास गुडा देखो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्लास आनिमा इट्स ए गुड थिंग मु मना करूनी बट सब्जेक्ट वाइज क्लास आनले कोन हुए ना गोटे पिला मन कर नाउन रे स्ट्रांग अछि बट से नाउन रो सब क्वेश्चन करि परिबो बट से जते एडजेक्टिव रो क्वेश्चन सडन ताको अपियर हो जाय ना से सेतरे पूरा माने टिके कोन कंफ्यूज हो जाय बुझी पारछ कोन कहूची कि जदी गोटे आर्टिकल रो क्वेश्चन पळे आसला कि गोटे एडवर्ब रो क्वेश्चन पळे आसला कि गोटे एडजेक्टिव रो क्वेश्चन पळे आसला देन ही यूज्ड टू बी लाइक वेरी नर्वस तो सेति भाई हमें मिक्स्ड क्वेश्चन रखु जंदी सो दैट गोटे पिला जते बेले एग्जाम हॉल रे तो किछि गोटे पर्टिकुलर सेक्शन रो क्वेश्चन आसीबोनी खाली नाउन रो क्वेश्चन आसीबोनी एग्जाम हॉल रे सब आडू क्वेश्चन आसीबो तो तुमको ओवरऑल प्रिपरेशन करिवार अछि सो दैट तमे सब एस्पेक्ट को इंग्लिश रो कवर अप करि परिबो बट आज यू सेड हमें पर्टिकुलरली क्लास रखिबा चैप्टर वाइज ओके टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हमें क्लास निहाती रखिबा ए क्लास रो ए क्वेश्चन आंसर करो ही वाज एन डैश स्विमर बट वाज स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रांग स्वेप्ट अवे माने कोन कहली तोड़ी दबा ही हाडे फिंगड़े दबा एंड बाय स्ट्रांग व्हाट बाय स्ट्रांग करंट बाय स्ट्रांग करंट करंट माने कोन ढेउ इट स्ट्रांग जते बेले गोटे माने बड़ो ढेउ आसे जते बेले गोटे बड़ो माने जते तमे भलो स्विमर हेताओ जते एबल हेताओ जते कैपेबल हेताओ जते बेले गोटे बड़ो ढेउ आसे यू हैव टू बी पुश्ड यू हैव टू बी पुश्ड बिकॉज़ तमे ढेउ अगेंस्ट रे क्रॉस करिकि स्विम करि परिबोनी एंड दैट इज ही वाज एन एक्सपर्ट स्विमर he was an expert swimmer but was swept away by a strong current तमे जदी बोट को नोटिस करिसो ताहाले तमे इजीली क्वेश्चन को बुझी परिबो एंड इजीली क्वेश्चन को करि परिबो ना कोन पई करि परिबी बोट रो स्टार्टिंग रे पॉजिटिव थिले बोट रो परे नेगेटिव हुए बोट रो स्टार्टिंग रे नेगेटिव थिले बोट रो परे पॉजिटिव हुए आज वाइज कॉन्टेक्स्ट वाइज पॉजिटिव थिले नेगेटिव हुए नेगेटिव थिले पॉजिटिव हुए बोट रो एटा जदी नेगेटिव एटा पॉजिटिव एटा जदी पॉजिटिव एटा नेगेटिव बुझी पारलो कोन कहली तो एक्सपर्ट माने कोन पॉजिटिव एंड स्वेप्ट अवे दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज ए करंट द स्ट्रांग करंट गॉट इट बुझी हला सर बेसी नहीं 15 क्वेश्चंस गोटे गोटे थरो अच्छा निहाती निहाती नेक्स्ट वन वर्ड्स आई विल डेफिनेटली ट्राई इट निहाती प्रतीक 100% नेक्स्ट क्वेश्चन बुझीबा बिले the teacher gives many examples to dash the idea content in the poem the teacher gives many examples to dash the idea content in the poem kono bring forth habo all about the kono एटा कोन phrasal verb okay तो phrasal verb रे तुम जदी bring रो all phrasal verb रे क्लियर अछ देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन इजीली गॉट इट ट्राई करो bring about हबो ना bring in हबो ना bring forth हबो ना bring out हबो the teacher gives many examples to what the idea content in the poem कोन हबो ट्राई करो कोन हबो bring about हबो ना bring in हबो ना bring forth हबो ना bring out हबो bring out the teacher gives many examples to the idea content in the poem ना bring out माने कोन आउ bring in माने कोन तुम कहितान तो कि सर तो टीचर gives many examples to bring in the idea content in the poem bring in माने कोन तुम कोन bring in माने कोन introduce bring in माने introduce ओके तो तुम कॉन्टेक्स्ट रे या बुझी थाई पारो माने तुम माइंड रे आसु थाई पारे कि टीचर पोएम रु किछि गोटे जिंस बाहर कल टीचर पोएम रु किछि गोटे जिंस बाहर करिया पय ट्राई करूछन तमे या कॉन्टेक्स्ट बुझी पार माने बुझिया पय ट्राई करतु बट दैट इज नॉट अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कोन कोनिछि ना ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेंट इन द पोएम ना पोएम रे जो आइडिया ऑलरेडी मेंशन अछि टीचर ताकू ही बाहर करिया पय ट्राई करूछन दैट इज कॉल्ड ब्रिंग आउट बुझेला देन ब्रिंग अबाउट एंड ब्रिंग फोर्थ माने कोन कहया पय ट्राई करो ब्रिंग फोर्थ एंड ब्रिंग अबाउट कोन हो ब्रिंग अबाउट एंड ब्रिंग फोर्थ माने कोन ब्रिंग फोर्थ एंड ब्रिंग अबाउट माने कोन ट्राई करो ब्रिंग फोर्थ एंड ब्रिंग अबाउट to make something clear to make something introduce that is called bring about okay to make something clear to make something crystal clear that is called bring about and bring forth माने कोन to birth to get birth जन्म हबा को bring forth बोली कहंती बुझेला
all the phrasal verbs are clear. The phrasal verbs ru तुम normal questions आसुची and you have to be mock all the phrasal verbs जो गुडा important phrasal verbs अछि तमे से गुडा को भलसे mock करिया को भलसे देखिया को पड़िबो ओके सर आपण कोन आसुनी सर कोन प्रतीक तुम मेसेज आसुनी कोन डिलीट हे गला कोन क्लियर मेक इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज डैश कोन हबो एटा पिले कोउद्र क्वेश्चन द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज तमे इंग्लिश रे पिले एटा गोटे कथा मन रखो जदि तमे जानि पारुछो कि क्वेश्चन टा प्रॉपर्ली को पार्ट ऑफ स्पीच रु को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो को रूल रु आसुची देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन तमे ए जिनछडा को पर्टिकुलरली जानिबा को पड़िबो कि एठी हमें को रूल यूज करूचंती कोन पाई ए भलिया क्वेश्चन एई वे रे मेंशन हेची कोन पाई अलगा वे रे मेंशन हेनी बुझी पारछो तो मु कोन कहूची बिकॉज़ देयर आर सर्टेन रूल्स इन इंग्लिश ओके से एडजेक्टिव रो को कि एडवर्ब रो को कि नाउन रो को कि प्रोनाउन रो को कि आर्टिकल रो को कि व्हाटएवर कंजक्शन प्रीपोजिशन व्हाटएवर बी टोटल ओके तो सबु रूल बेसिस रे हमर क्वेश्चन एग्जामिनर मेक करे तो तुम जदि जानि पारुछो ते क्वेश्चन कोठू पर्टिकुलरली आसुची क्वेश्चन को पार्ट ऑफ स्पीच रु आसुची देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन तो पहिले एटा को पार्ट रु क्वेश्चन आसी ना एडजेक्टिव पार्ट रु क्वेश्चन आसी कंपैरेटिव डिग्री रो एडजेक्टिव पार्ट रु क्वेश्चन आसी तार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे रूल कोन कहूची ना व्हेन यू हैव द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज द प्लस कंपैरेटिव डिग्री देखो ना द मोर द रहिला द मोर कंपैरेटिव डिग्री रहिला इलेक्ट्रिसिटी यू सी दैट इज ऑब्जेक्ट तापर कोन लागिया कथा द लागिया कथा प्लस कंपैरेटिव डिग्री रहबा दरकार देन कोन हबो ताले द हायर यू विल बी द हायर योर विल बी द रहिला हायर को हायर कंपैरेटिव डिग्री रहिला योर विल बी इज द ऑब्जेक्ट हियर बुझियला कोन कहली यार मीनिंग कोन बुझि पारछो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा the rich parents decided to send their two sons to Eton the stronghold of the dash of the rich the stronghold of the dash of the rich context को बुझिया पई ट्राई करो पहिले कोन से पचारि जे एग्जैक्टली से कोन कहू the rich parents decided ट्राई करो context को बुझिया पई फास्ट ट्राई करो I give time ट्राई करो context को बुझिया पई कोन एटा कहूची एठी कोन लागिवो फास्ट कथा हला तमरो सब जिंसरो मीनिंग जानि थिबा दरकार तमे सब जिंसरो मीनिंग जानि थिबा दरकार प्रोजेनी माने कोन प्रोजेनी माने तुमको कहिथिली प्रीवियस क्लास रे प्रोजेनी माने कहिथिली ट्राई करो जल्दी ट्राई करो पेडिग्री एंड ancestry these are the synonyms okay these are the same meaning त माने कोन फैमिली बैकग्राउंड ओके फैमिली बैकग्राउंड ओके प्रोजेनी माने कोन चिल्ड्रन प्रोजेनी माने चिल्ड्रन से प्लांट रो चिल्ड्रन हो कि से एनिमल रो चिल्ड्रन हो कि से ह्यूमन बीइंग रो चिल्ड्रन हो दैट इज कॉल्ड प्रोजेनी ओके तो यार कॉन्टेक्स्ट को मैच करले को आंसर ता हमर पर्टिकुलर होउची ना द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर टू सन्स टू एटन माने गोटे जागा ओके एटन द स्ट्रांग होल्ड ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द रिच द स्ट्रांग होल्ड ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द रिच प्रोजेनी ऑफ द रिच माने स्ट्रांग होल्ड ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द रिच माने कोन गोटे धनी बापर पुओ को को भलिया माने अपीयरेंस मिलिबा दरकार that shows that a rich parent decided to send their sons to Eton बुझियला बिकॉज़ फॉरेन रे गोटे पिला को जदी गोटे जने पेरेंट्स जने पठौची हमें तो आज फॉरेन जाई पालुनी बट जो पेरेंट्स माने फॉरेन जाई कि तांको पिला को पढेबा पई फॉर स्टडी पर्पस पढोजंती बट व्हाई बिकॉज़ दे वांट्स टू tell the society that we are rich and our children are get chance to study in the foreign countries बुझियला कॉन्टेक्स्ट एया कोच बुझी पाल अन पेरेंट्स मान तो जानि छ पेडिग्री एंड एंसेस्ट्री माने फैमिली बैकग्राउंड गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेस्ड शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेस्ड एठी या से भी गोटे पर्टिकुलर माने फिक्स्ड प्रीपोजिशन लागे स्टूड विथ ना कोन ना स्टूड इन ना कोन स्टूड रो एटा पास्ट फॉर्म रे अछि तो एरा प्रेजेंट फॉर्म कोन स्टैंड जते बेले भी गोटे फ्रेजल वर्ब रो कि गोटे फिक्स्ड प्रीपोजिशन रो पूर्व वाटा पास्ट फॉर्म रे थिबो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रे थिबो ताको आगो तुम नॉर्मल वर्ड को आनि पकेबो
so that तुम जदि से जिंस भल से पढ़ी थिबो then you can easily answer the question. Okay, stood among हबनी, stand in हुए, stood among हुएनी, stand in हुए सब बेले stand सहित in लागे, stand सहित in सब बेले fixed position लागे, and in is mentioned to your place where you stand, where are you from and where you stand, the particular place in is used for that. गोटे पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई करिया पई हमें इन प्रीपोजिशन यूज करंती सेति पई दैट इज स्टैंड इन एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बुझियला यस यस यस. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना द ट्रैवलर. अच्छा पिले एगुडा हला पैराजम्बल. ओके एबे तमरो क्वेश्चन पैराजम्बल आसुची रेगुलरली. पैराजम्बल क्वेश्चन पांचटा अछि. ओके पैराजम्बल क्वेश्चन बा सेंटेंस रीअरेंजमेंट को हम जहां भी को पैराजम्बल को कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट को व्हाटएवर यू टेल. ओके तो पैराजम्बल रो पांचटा क्वेश्चन अछि ट्राई करो. पैराजम्बल पांचटा क्वेश्चन रे एबे कोन करूची ना से तुमको फर्स्ट सेंटेंस ता दे दोछ, लास्ट सेंटेंस ता भी दे दोछ, सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट कि तुमको फर्स्ट सेंटेंस सहित का सहित जोड़ीबार अछि किबा लास्ट सेंटेंस सहित काहा को जोड़ीबार अछि. पैराजम्बल एबे बहुत इजी करूची कोन पाई बड़ बड़ सेंटेंस दोउची. आई नो आई एग्री बड़ बड़ सेंटेंस दोउची सो दैट तमे कंफ्यूजन आसी पारे कि कोन कोडा परे कोन काहा परे कोन. बट तमे जदी जानि पारुचो देन से तारो फर्स्ट सेंटेंस दोउची आ तारो लास्ट सेंटेंस भी दोउची. तो जदी फर्स्ट सेंटेंस आ लास्ट एतरे लास्ट सेंटेंस नाही बोदे. ओके ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज देयर. ओके तो जेतु लास्ट सेंटेंस नाही किबा फर्स्ट सेंटेंस दोउची गोटे गोटे सेंटेंस रे कोन दोउची गोटे गोटे क्वेश्चन रे फर्स्ट सेंटेंस दोउची देन पैराजम्बल दोउची सेंटेंस अरेंजमेंट करिया पई. गोटे गोटे क्वेश्चन रे लास्ट सेंटेंस दोउची पैराजम्बल दोउची टोटल सेंटेंस अरेंजमेंट करिया पई. गोटे गोटे क्वेश्चन रे फर्स्ट सेंटेंस भी दोउची लास्ट सेंटेंस भी दोउची. बुझियला. तो राइट कि फर्स्ट सेंटेंस जेतु देइजी ताकू रिलेट करी कि तापरे को सेंटेंस रही परिबो. ट्राई करो. द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. नियरेस्ट इन माने होटल हला. ए इन माने कोन होटल जोडी रहिबा जगह. गॉट इट. तो ट्राई करो बिले कोन हबो. द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. कोन हबो कोन हबो ट्राई करो जल्दी. द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. तो तुमको गोटे ट्रैवलर आसिकी पचाला कि आपण ए पाखरे को होटल विषय जानि छंती कि तमे कोन करबो. आइदर यस करबो ना नो करबो. देन यू आर अ स्ट्रेंजर and this pigeon is like a stranger. This pigeon is a farmer or stranger. Whatever you tell. Okay se kon कहला yes said the pigeon. Yes I know said the pigeon. ताने फर्स्ट कोन रहला q. तापरे कोन से किछि गोटे क्वेश्चन पचारिबो तुमको कि कोन पई तुम मते पचारले क्वेश्चन ता do you want one in which you can spend the night. से कोन कहला कि do you want कि so that तमे सेठी नाइट स्पेंड करिया पई मते ए भलिया क्वेश्चन पचारु छु कि रहिबा पई. त माने कोन आसिला क्यूपी. तापरे कोन ना से कोन रिप्लाई दबो. ताले जदी गोटे ट्रैवलर तुमको क्वेश्चन पचारला तुम यस कहलो देन तमे ताको गोटे क्वेश्चन पचारलो तापर से भी गोटे रिप्लाई दबो. तो द ट्रैवलर व्हाट रिप्लाइज ना यस replied the traveler thank a lot. Yes replied the traveler. Yes replied the traveler. एटा आउ गोटे पिले सेंटेंस. ओके एटा लास्ट सेंटेंस एटा हला. एटा मेंशन हेनी एटा लास्ट सेंटेंस. थैंक यू लॉट ता लास्ट सेंटेंस. यस रिप्लाइड द ट्रैवलर. ता माने कोन यूपीएस. ताले कोन बंची गला गो राइट डाउन द रोड एंड टर्न द लेफ्ट. एटा किए कहला एटा कहला ना प्रेजेंट पिजन कहला कि कोन कहला से तुमको नेविगेट कर देला कि तमे को जगह को गले तमे रहिबा पई वासस्थल पाई जिवो. तापरे ट्रैवलर कोन आंसर करिवो थैंक यू लॉट. लास्ट क्वेश्चन बुझेला. ताले कोन हला ना द ट्रैवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन. देन यस सेड द पिजन. देन ही आस्क्ड do you want on in which you can spend the night. Then the traveler answered yes replied the traveler. Then the pigeon tail go right down on the road and turn to the left and the traveler said thank you lot. त माने कोन हला QPSR कोडी अछि QPSR. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ए बळ्या ट्राई करो. मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स. मनी is not the root of all evils. Try करो कोन हबो. एटा बिले लास्ट सेंटेंस हला. Now we can only say that money is the root of some evil.
एटा हला बिले लास्ट सेंटेंस हैला एटा लास्ट सेंटेंस बुझियला एटा तुमको मेंशन अछि नो वी कैन ओनली से दैट मनी इज द रूट ऑफ सम एविल ए जो चारटा सेंटेंस को पी क्यू आर एस को तुमको रीअरेंज करिवार अछि ट्राई करो कोन हबो ट्राई करो कोन हबो मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल एविल्स तो तारो जदि हमें रीअरेंज करिवा इवन पर्पसलेस cruelty can be seen in many instances of evil behavior because देखो evil एठी अछि एठी भी evil अछि तो तमे जदी एई जो पैराजम्बल रो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को जतबे हमें सॉल्व करंती तो किछि कीवर्ड को खोजिबा को पड़े कोन कीवर्ड को खोजिबा को पड़े फर्स्ट सेंटेंस जोडा देइछि तारो रिलेटेड कीवर्ड आउ किछि सेंटेंस रे अछि की तारो रिलेटेड कीवर्ड आउ किछि सेंटेंस रे अछि की तापरे हमें सही सेंटेंस को डायरेक्टली जंप करंती तो एविल एविल को उठरे अछि एविल 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 एठी एविल अछि ओके तापर एठी रे एविल अछि कि ना एठी एविल देइनी फर्स्ट सेंटेंस रे एविल अछि कि ना फर्स्ट सेंटेंस रे एविल देइनी त माने क्यू एंड एस सेंटेंस रे एविल अछि त माने पी एंड आर सेंटेंस कटि गला इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एविल बिहेवियर आउट सेंटेंस कोन देइछि ना द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स तो तमे या परे को क्वेश्चन को स्टेटमेंट को रखिया को चाहिबो ऑप्शन क्यू इज द करेक्ट आंसर या परे तमे ऑप्शन क्यू को रखिया को चाहिबो गॉट इट तापर इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एविल बिहेवियर तापर तमे जदी एविल को माने जानि पारुछो ताले तापर कोन रहबा दरकार आइदर एविल रहबा दरकार बट या सहित ए सेंटेंस रो कॉन्टेक्चुअली किछ मैच करूनी को सेंटेंस ता मैच करूची और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स देखो इट ऑलरेडी क्राइम विषय देइछि purposeless cruelty and that is called indirectly is about crime that is called all about crime so crime एठी देइछि already what is the crime yes here is the crime बुझियला मु कोन कहूची बुझि पारुछो ताहले क्यू परे को सेंटेंस आसिला क्यू परे पी आसिला क्यू परे पी आसिला तापरे कोन हबो फॉर एग्जांपल neither teacher nor parents profit in any way by torturing children the evils of sexual offenders are not motivated by financial gains कोन हबो ए सब आगो ना आर हबो आगो ट्राई करो एग्जांपल हमें केते बेले दियंती एग्जांपल हमें केते बेले दियंती एग्जांपल हमें केते बेले दियंती जेतेबेले गोटे जिंस को हमें मेंशन कर देले तार जस्ट हमको गोटे एग्जांपल देबा को पड़िबो तो एग्जांपल दीटा सेंटेंस जेतेबेले हमको मेंशन करा सला पी क्यू एंड पी हमें मेंशन करि सारले गोटे ओवरऑल स्टेटमेंट हमें करि सारले तापर हमें एग्जांपल देबा फॉर एग्जांपल neither teachers nor parents profit in any way by the torturing children तापर तार लास्ट सेंटेंस कोन बंची गला ना द एविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन्स बुझियला पिले कोन कहली ता माने कोन हला क्यू पी आर एस क्यू पी आर एस कोठी अछि क्यू पी आर एस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गॉट इट ऑप्शन सी की जो माने कहउन सेटा भूल अछि ऑप्शन सी जोडा कहउछो तमे सेटा भूल अछि आर एस पी क्यू कदा भी होबनी पिले बड़ बड़ पैराजम्बल क्वेश्चन हम पैराजम्बल क्वेश्चन करिवा ओके तमनकर डाउट रहउजी पैराजम्बल क्वेश्चन रे बड़ बड़ पैराजम्बल क्वेश्चन रे तमर डाउट रहउजी एंड आरआई क्वेश्चन रे एम्ति बड़ बड़ पैराजम्बल क्वेश्चन ही आसीची जो माने देखिचो मे बी मते तो लागुची कि आरआई क्वेश्चन माने आरआई एग्जाम कैंसिल होबा ऊपर व्हाट आई फील आई डोंट हैव द एक्यूरेट आईडिया बट मते फील होउची या कि जहा जेमति माने चालीला जहा जेमति पिला मानकर प्रॉब्लम थिला जेमति से माने जणैले कि तांको पड गोटे पॉजिटिव साइन आसी जे आरआई एग्जाम कैंसिल होबा ओके बट आरआई एग्जाम रे एभला क्वेश्चन अपियर हेछि बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि बिले इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कोन हबो ताले वो एडा हला लास्ट क्वेश्चन बिले एडा हला फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एडा देछि स्टेटमेंट एटा लास्ट स्टेटमेंट दीटारा मेंशन अछि एई चारटा भितरे तमे ये करो पी क्यू आर एस अच्छा अच्छा सॉरी दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट दिस इज नॉट मेंशन okay this is the last statement try karo kon hobo even the smallest insect of the living world is made of a large number of cells kon hobo try karo jaldi even the smallest insect of the living world is made of a large number of cells so it also has cells देखो मु कहि दिली रिलेट करिया को पड़े किसी कीवर्ड कोन ना इट आल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस कोन देइछि से जो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट देइछि
से स्मॉलेस्ट इंसेक्ट विषय जेहेतु लार्ज नंबर ऑफ सेल विषय पचार ताको डिवाइड करिछि ना इट आल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन माने कोन आसिला भारी ऑप्शन आर आसिला भारी ऑप्शन आर कोठी अछि ऑप्शन आर तो नाही ऑप्शन आर तो आगो नाही ताले ता पूर्वरु आ उटे कोन रहिबो ताले ता पूर्वरु आ उटे कोन रहिबो एन आंट क्यू रहिबो बोधे क्यू रहिबो बोधे बिकॉज़ जेहेतु गोटे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट विषय पचारिछि तो ताले कोन रहिबो ना आंट और ए gnat फॉर एग्जांपल इज ए composed of hundreds of thousands of cells ता माने कोन रहिला फर्स्ट रहिला क्यू गॉट इट फर्स्ट रहिला क्यू तापर रहिला कोन furthermore the cells in these small creatures widely differ in their structure and functions ता माने कोन रहिला तापर कोन हबो फर्स्ट रहिला क्यू तापर पी रहिबो ना आर रहिबो कोन हबो तापर पी रहिबो ना आर रहिबो तापर कोन रहिबो तापर furthermore the cells furthermore qr पर कोन अछि qr ऑप्शन देखो तो qr ना qr तो नहीं एटा तो कटि गला एटा भी कटि गला qrsp द सेल सिस्टम ना ताले कोन हला ताले कोन हबो qp कोडी अछि qp ताले ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कहूची कोन पई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ तुम जदी सेंटेंस को ठीक से देखियो ताले देखो एटे कोन अछि ना इवन the smallest insect of the living world is made of a large number of cells that is an ant or a gnat for example is composed of hundreds of thousands of cells याकू satisfy को sentence कला ऑप्शन जो sentence क्यू याकू satisfy कला एग्जांपल देख तापर कोन गला ना तापर पी को आसला फर्दरमोर ताकू सेही सेंटेंस को आउ टिके एक्सटेंड कला सेही सेंटेंस को आउ टिके एक्सटेंड कला कोन एक्सटेंड कला ना furthermore the cells in these small creatures widely differ in their structure and functions टिके ए सेंटेंस को क्यू सेंटेंस को टिके स्ट्रेच कला तापर को सेंटेंस को आसिला आर सेंटेंस को इट आल्सो हैज सेल्स डेडिकेटेड टू डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ए जो सेंटेंस को डिवाइड करिया पई कि एते छोटो रे एते बहुत सारा सेल्स अछि ताकू जतले डिवाइड करिया पई से पळे आसिला से को सेंटेंस को आसिला ना तारो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी किछि सेल अछि तार रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी किछि सेल अछि सेटा से जानि कि मेंशन करला ताले ऑप्शन आर तापरे आसिला एंड लास्ट रहिला कोन ऑप्शन एस ओके ताले करेक्ट आंसर कोन QPRS बुझेला आसीबा आनिबा या पई गोटे स्पेशल सेशन आनिबा फॉर एग्जांपल पई गोटे स्पेशल सेशन आनिबा तमनकर बहुत भूल होउची एई क्वेश्चन रे फॉर एग्जांपल पई आनिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को करो एडवोकेट्स ऑफ द स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग huge amounts of होची हला इले एटी ऑफ होची कटि जाई छेटा एटी ऑफ होची ओके ऑफ huge amounts of money and exploring Mars कोन हबो ट्राई करो जल्दी advocates of the space program argue for spending huge amounts of money on exploring Mars तो तापरे कोन हबो तापरे बी हबो but there is no firm evidence of any valuable mineral that can be extracted from Mars and transported to Earth बुझेला then they are also unrealistic about the cost of the transportation that will be involved in the interplanetary movement of men and material ता माने PR सेंटेंस ता P आउ R रे जो सेंटेंस अछि किछि रिलेटेबल करूछि these enthusiastic argue that Mars could be a perennial source of material for us earthlings एटा कोन हबो ट्राई करो कोन हबो डिफिकल्ट मत तुमको लागु थोटा डिफिकल्ट बोली किछि डिफिकल्ट नाही एतरे ट्राई करो कोन हबो जल्दी ट्राई करो कोन हबो पिले advocates of the space program argue for spending huge amounts of money on exploring Mars को contradict करिया पई ताकू contradict करिया पई कोन अछि ना but there is no firm evidence ता माने कोन आगला भाई फर्स्ट P आसला भाई फर्स्ट कोडी अछि P ऑलरेडी P अछि ता माने PRSQ is the correct answer because ए सब रे तो आगो P नाही ए सब आगो रे तो P नाही ता माने कोन P जदी पळे आसला ता माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बुझियला एमती तमे नेग्लेक्ट करकी भी एमती कैंसिल आउट करकी भी
करि परिबो क्वेश्चन कारण आ कोदरे पी आगो नाही तो या परे पी ही आसीबो जदि कॉन्टेक्स्ट को तमे देखुचो गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि अच्छा एटा गोटे एंटोनिम पिले पचार दिया हिज तुमको सिनोनिम सॉरी एटा गोटे सिनोनिम पचार हिज तुमको ट्राई करो कोन यार सिनोनिम माने कोन फॉरसेक माने कोन कहितली काली प्रीवियस क्लास रे कहितली प्रीवियस क्लास रे कहितली ट्राई करो कोन फॉरसेक माने कोन व्हाट इज द मीन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरसेक माने कोन लीव समवन और abandon ओके फॉरसेक माने लीव समवन और abandon अपरेंट माने कोन अपरेंट माने कोन अपरेंट माने अरेस्ट एक्सेप्ट relinquish adulteration माने कहितली कोन adulteration माने कोन कहिची adulteration माने कोन ट्राई करो adulteration माने कोन relinquish माने भी फॉरसेक बुझेला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट ऑप्शन सी abandon relinquish गॉट इट adulteration माने कोन को मु कहिची एटा प्रीवियस क्लास रे तुमने कमेंट सेक्शन में जणाइबो adulteration माने कोन ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि impertinent एटा एंटोनिम पिले हला एगुडा सब एंटोनिम रो क्वेश्चन एंटोनिम एबे जहा भी आसीबो ए सब हला एंटोनिम रो क्वेश्चन मेंशन हेइनी मु तुमको जणे दउची यार एंटोनिम तुमको खोजिया को पड़िबो impertinent माने कोन ट्राई करो impertinent माने कोन impertinent ट्राई करो कोन impertinent माने impertinent माने कोन impertinent ट्राई करो impertinent माने कोन फास्ट कोन कहितली एंटोनिम रे फास्ट किमा सिनोनिम रे फास्ट तुमको मीनिंग गोटे रॉ मीनिंग तुमको खोजिया को पड़े impertinent रो रॉ मीनिंग कोन ट्राई करो impertinent रो रॉ मीनिंग कोन impertinent रो मीनिंग हैला क्रूएल impertinent रो मीनिंग हैला क्रूएल तो क्रूएल रो जो लोक क्रूएल तार सिनोनिम कोन हो रेस्पेक्टफुल एंड इज द करेक्ट आंसर मॉडेस्ट माने कोन इन ए वेरी लार्ज दैट इज कॉल्ड मॉडेस्ट इन ए वेरी लार्ज ओके इन ए वेरी लार्ज दैट इज कॉल्ड मॉडेस्ट एरोगेंस एप्रोप्रिएट मान तो तुम जानिछो ओके यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एटा भी एंटोनिम रो क्वेश्चन दिस इज आल्सो इन फ्रॉम एंटोनिम ओके ट्राई करो रफ माने कोन रफ एंटोनिम तो तुम जानिछो इजीली रफ एंटोनिम कोन स्मूथ इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन टू यू गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नॉट नीडेड टू एक्सप्लेन रैटिफिकेशन माने कोन ट्राई करो रैटिफिकेशन माने कोन ट्राई करो रैटिफिकेशन व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन 23 क्वेश्चन रैटिफिकेशन माने कोन ही रैटिफाई द क्वेश्चन ही रैटिफाइड द एग्रीमेंट माने कोन रैटिफिकेशन माने पहिले हला अप्रूवल ओके तो अप्रूवल रो एंटोनिम कोन डिसअप्रूवल डिनायल माने कोन इट वेरी बैड थिंग डिनायल माने वेरी बैड थिंग बुझियला डिनायल माने कोन ए वेरी बैड थिंग और बैड स्टेटमेंट और कहि परिबो बैड स्टेटमेंट बुझियला बैड थिंग और ए बैड स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड डिनायल एंड डिसएग्रीबल माने तो जानिथिबो डिस्टर्बिंग माने जानिथिबो तुम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ओमिट दिस इज आल्सो इन फ्रॉम एंटोनिम ट्राई करो ओमिट माने कोन ताकू एक्सक्लूड करी की ताले एक्सक्लूड करिबा ओमिट रो सिनोनिम कोन एक्सक्लूड तर एंटोनिम ताले सॉरी एंटोनिम कोन हो इंक्लूड बाहर को बाहर करिबा भीतर को भरी करिबा बुझियला अंडरटेक ऐड जानिछो नॉट नीडेड टू एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन माने कोन जो माने मैथमेटिक्स रे प्लस 2 रे जो माने साइंस नै थिबो जो मानकर प्लस 2 रे साइंस थिबो जेतेबेले तुमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सर पढै थिबे देन ही फर्स्ट सेड यू फर्स्ट तुमको से बुझै थिबे व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन फर्स्ट सेशन फर्स्ट क्लास रे जेतेबेले तुमको डेरिवेटिव आ इंटीग्रेशन सर आसीथिबे प्लस सॉरी प्लस 2 रे तुमको निहाती से कहिथिबो व्हाट इज डेरिवेटिव एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ट्राई करो इंटीग्रेशन माने कोन इंटीग्रेट करिबा इंटीग्रेट माने कोन फ्रैगमेंट करिबा इंटीग्रेट माने कोन फ्रैगमेंट करिबा ना जॉइन करिबा इंटीग्रेट माने कोन इंटीग्रेट माने जॉइन करिबा इंटीग्रेटिंग समथिंग इंटी डेरिवेटिव माने फ्रैगमेंट करिबा इंटीग्रेटिंग माने जॉइन करिबा देन जॉइन करिवार एंटोनिम कोन इंटीग्रेटिंग माने कोन जॉइन करिबा जॉइनिंग ओके तो तार एंटोनिम कोन हबो फ्रैगमेंटेशन बुझियला कोन कहूची बुझियला तो फ्रैगमेंटेशन रो आ गोटे सिनोनिम कोन डेरिवेटिव दिस इज द सिनोनिम ऑफ फ्रैगमेंटेशन डेरिवेटिव गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन पिले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पांचटा क्वेश्चन हमें 30 टा क्वेश्चन करंती 26 रु 30 एंड 26 टू 30 क्वेश्चन ऑल आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड किलिंग ऑफ ए चाइल्ड जानी थी बड़ा इजी क्वेश्चन वेरी इजी टू आंसर जल्दी ट्राई करो किलिंग ऑफ ए चाइल्ड वेरी इजी टू आंसर ट्राई करो जल्दी माने कौन इन्फेंटिसाइड माने किलिंग ऑफ ए चाइल्ड जेनोसाइड माने कौन किलिंग ऑफ ए रेस किलिंग ऑफ ए रेस दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड जेमिति हमर कोन जो लिटिल बॉय जो परमाणु बोमा थिला जोडा नागासाकी रे पडिथिला सेति पय केते लोकंकर जीवन गला दैट इज कॉल्ड ए जेनोसाइड बुझला किलिंग ऑफ ए रेस ना होमिसाइड माने कोन मर्डर होमिसाइड माने पिले मर्डर होमिसाइड माने मर्डर एंड सुसाइड माने तो जानि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग कोन हबो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग क्या कहले जो माने फूडी द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग जो माने फूडी से माने तो इजीली आंसर कर परिबो ट्राई करो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी ओके व्हाट डज इट मीन दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी बुझियला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर गैस्ट्रोनॉमी माने तुम पहले गैस्ट्रिक भाबिलो कि जो माने गैस्ट्रिक भाबिलो दे आर इन ए ब्लंडर जो माने गैस्ट्रिक भाबिलो दे आर इन ए ब्लंडर गैस्ट्रोनॉमी माने गैस्ट्रिक पेशेंट नो द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी ओके एंड गवर्नमेंट माने ताले कोन गवर्नमेंट द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमी बट द आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स द आइडिया अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स दैट इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट हला ना कोन आइडिया अबाउट different type of foods different type of foods okay that is called government and vegetarian माने तो जानि छो astronomy माने कोन astronomist astronomy चंद्र तारा मानक विषय जो माने कथा कोन that is called astronomy got it next question को जिबा one who is indifferent to pleasure or pain one who is indifferent to pleasure or pain कौन हबो ट्राई करो जल्दी कौन हबो one who is indifferent to pleasure or pain माने जे माने प्लीजर और पेन को ऑलरेडी त्याग करि सारि जे प्लीजर और पेन को त्याग करि सारि that person is called a stoic that person is called a stoic stylist माने जानिछो psychic माने कोन psyche जो कोन दी psych is a psych this is pronounced as psych not psych that is pronounced psych बुझेला psych बुझि परछो psych माने कोन
बियॉन्ड नेचुरल जो साइको कहती बियॉन्ड नेचुरल दैट इज कॉल्ड साइक एंड साइनिक माने कोन सिनिक माने साइनिक सिनिक माने कोन सिनिक सिनिक SYNIC सिनिक सिनिक माने कोन ट्राई करो सिनिक माने कोन सिनिक माने when you have to be put more effort to motivate someone you have to be put everything to motivate someone but it doesn't motivate बुझी पारजो hard to motivate someone that means hard to motivate someone that is called sync बा sync बुझीला तार प्रोनाउंसिएशन बुझी पार सैनिक कहि पार बा सिंक कहि पार व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट कोन हबो लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट जेमति कोन लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट जो उल्का पिंड पड़े लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट फॉर ए फ्यू सेकंड्स गॉट इट कोन हबो दाले लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट ट्राई करो लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट lasting only for a moment ता माने हला momentary option C is the correct answer momentary okay lasting only for a moment is called momentary and momentous माने कोन momentous माने is a very precious time or is very important okay very important got it very important that is called momentous and trivial माने कोन trivial and petty ट्राई करो trivial and petty माने कोन trivial and petty माने कोन petty माने trivial माने not important and petty माने small thing बुझियला petty माने small thing trivial माने not important momentary माने lasting only for a small moment momentous माने कोन जेतबले adjective हे गला OUS adjective then it takes adjective that means very important बुझियला कोन कहूची and trivial माने not important माने momentous रो antonym कोन trivial रो antonym कोन momentous बुझियला मैच करि पारुछ तो yes last question of the session to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something kon habo to seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or order something or demand something kon habo try कर जल्दी এটা তো बढ़िया क्वेश्चन टे बढ़िया तमे तो माने एग्जाम जो मूवी रे एटा तो नॉर्मल सीन माने कोन हाईजैक रे कोन हुए गोटे वेहिकल को गोटे बड़ वेहिकल को से माने कंट्रोल निजर कंट्रोल को आनी पकांती तापरे तांकर जहा डिमांड थाए सेडा तांकर डिमांड मागंती दैट इज कॉल्ड हाईजैक ओके एंड अटैक माने जानिछो कॉन्ट्रैक्ट माने जानिछो डिटोर माने व्हेन अ पर्सन गो लॉन्ग वे टू रीच somewhere and avoid disturbances a person go somewhere else and avoid disturbances for that he has to go a long distance बुझेला गोटे दूर बाट को जतबे गोटे लोक जाउची डिस्टर्बेंसेस को ओमिट करबा पई से जतबे गोटे लॉन्ग रूट नउची कि ट्रैफिक हो कि व्हाटएवर इज देयर ट्रैफिक बेसिकली ट्रैफिक को इग्नोर करबा पई से जतबे लॉन्ग रूट को क्रॉस करूची दैट इज कॉल्ड डिटोर बुझेला कोन कहली सो हमर 30 टा क्वेश्चन सरी जाईची ओके टुडे सेशन इज फिनिश्ड ओके सो थैंक यू एवरीवन कि तुमने एते पेशेंस सहित क्वेश्चन को देखिलो एंड इफ यू लाइक द सेशन देन काइंडली शेयर द सेशन टू योर फ्रेंड्स विथ योर फ्रेंड्स तो सो दैट आमे आउ किछि माने बेटर तांको पई बेटर वे रे तुम आगु को रिप्रेजेंट हेई परिबु ओके सो थैंक यू तो आमे देखा हबा नेक्स्ट सेशन रे एंड गुड नाइट टू एवरीवन